Good morning, dears. In previous part, I have discussed about some important formulas regarding miscellaneous series. मैंने आपको sum of first and natural numbers, sum of squares of first and natural numbers, sum of cubes of first and natural numbers ये previous part में बता दिया था. Now moving ahead, sum of the series whose nth term is given. Sum of the series whose nth term is given. हम अब उस सीरीज का सम निकालेंगे जिसका nth टर्म हमें गिवन है. Let the nth term of the series be an cube plus bn square plus cn plus d. This is the nth term of the series which we have given, and now we have to find the sum of this series. The sum of the series. What we have to do? We know. What about if nth term is given and we have taken the summation of nth term from 1 to n? It is the sum of the series. So Sn is summation of Tn. Sn is summation of Tn, and this is summation of an cube plus bn square plus cn plus d. A, B, C, D are arbitrary constants. A, B, C, D are arbitrary constants which we have given. These are the arbitrary constants. A, B, C, D are the arbitrary constants. So Sn is, see here, this can be written as summation of an cube. That means A arbitrary constant को take outside, summation n cube, plus B summation n square, plus C summation n, plus D summation 1. In previous part, I have told you what is summation n cube. Sum of cubes of first n natural numbers. Sum of cubes of first n natural numbers. So, what is the sum of cubes of first n natural numbers? Write in message box. Also, the value of sum of squares of first n natural numbers. Also, the value of sum of first n natural numbers. And also summation 1 till n. Write down in message box. Quick. Be fast. Dears, be fast. Yes, Anurag Singh, n square n plus 1 to the whole square whole upon 4. Very good. This is summation n cube. Now summation n square. Write down. Yes, students are trying very well, Anurag Singh. N plus 1 to n plus 1 whole upon 6. Very good. Summation n.
Yes, I am still waiting. Summation n. Good, keep it up. Summation 1 till n. Summation 1 till n. Good, 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 good. So we will substitute these values n square, n plus 1 to the whole square, whole upon 4 plus b, n plus 1, 2n plus 1 by 6 plus c, n plus 1 by 2 and plus d, summation 1 till n is n. And after substituting the values of summation n cube, summation n square, summation n, summation 1, we have to calculate this. Only to calculate this. यानी only to solve this. और सॉल्व करके जो भी आएगा वही क्या होगा, उस सीरीज के n टर्म्स का सम होगा जिसका nth टर्म इज गिवन. nth टर्म इज गिवन, so sum of n terms. Hopefully you understand this. Note it down. Be fast. Hopefully you note this one. Now moving ahead with one question. Find the sum of n terms of the series. Find the sum of n terms of the series whose nth term is given by. Find the sum of n terms of the series whose nth of the series. Now we will write the series 1 square plus 2 1 square plus 3 square 1 square plus 3 square plus 5 square plus and so on 1 square plus 2 square 3 square plus 5 square plus and so on plus 2n minus 1 to the whole square plus 2n minus 1 to the whole square. So we have to find the sum of this series till n terms. We have to find the sum of this series till n terms. अब सबसे पहले हम लोग इसको लिख लें सॉल्यूशन. Sn equal 1 square plus 1 square plus 3 square plus 1 square plus 3 square plus 5 square plus and so on plus 1 square plus 3 square plus 5 square plus and so on plus 12 minus 1 to the whole square. Another term of this series, another term of this series
आप देख सकते हैं यही टर्म जो है, दिस इज द nth टर्म, दिस इज द nth टर्म। यहाँ पे 1 टर्म का सम है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, इसी तरह से यहाँ पे n टर्म्स हो गए, n टर्म्स का सम है, यानी ये nth टर्म है। फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2 नंबर के स्क्वायर का सम है, थर्ड टर्म में 3 नंबर के स्क्वायर का सम है, इसी तरह से यहाँ पे n नंबर के स्क्वायर का सम है, इसका मतलब ये nth टर्म है। तो nth term of the series is Tn is 1 square plus 3 square plus 5 square plus and so on plus 12 minus 1 to the whole square. This is summation of 2n minus 1 to the whole square. ये इसका nth term है, ये इसका nth term है। तो इसका समेशन ही एक Tn बनाएगा, यानी इस पूरे का सम होगा। दिस इज समेशन ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। दिस इज 4 समेशन n स्क्वायर माइनस 4 समेशन n प्लस समेशन 1। 4 n plus 1 2n plus 1 by 6 minus 4 n plus 1 by 2 plus n. N taken as common, n by 3 taken as common. So this will remain 2n square plus 3n plus 1 minus this is 3 to the 6 of n plus 1 plus 3. Simplify this one, n by 3, 4n square plus 6n plus 2 minus 6n minus 6 plus 3 plus 6n minus 6n cancel out, n by 3 4n square minus 1, 4n square minus 1, this is 1 by 3 4n cube minus n, 4n cube minus n. This is nth term of the series. We have find the nth term. Now, sum of terms now Sn will be summation of Tn. Sn will be summation of Tn. That is, this is Tn. We have find out, and when we take the summation of this, we will get the sum of the series. Summation 1 by 3 4n cube minus n, 1 by 3 in bracket 4 summation n cube minus summation n. The value of summation n cube we know very well. N square n plus 1 to the whole square by 4. Summation n plus 1 by 2. So this is the value of summation n. This is the value of summation n cube and summation n. Now 2 to the 4 twice. n plus 1 by 2 taken as common, n plus 1 by 2 3 are 6, 2n plus 1 minus 1. So this will be n plus 1 by 6, 2n square plus 2n minus 1. This is our answer. Sum of n terms of the series. Sum of n terms of this series. Note it down.
यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को एक बात और नोटिस करा दूं। जैसे हमने इसका सीरीज का पूरा प्रॉपर फार्मूला लगा करके nth टर्म इसका निकाला, हम लोग जाएंगे nth टर्म इसका क्या बनाएंगे 2n-1, इसका nth टर्म इस सीरीज का nth टर्म क्या बनता है 2n-1, क्योंकि ये तो हर एक टर्म के स्क्वायर चल रहा है, तो nth टर्म तो सीरीज का 135 का nth टर्म क्या है 2n-1, और स्क्वायर वाले फार्मूले में हम लोग इजी वे में सब्स्टिट्यूट कर ले n की जगह 2n-1, 2n-1 प्लस 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालना चाहे तो हम वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। Hopefully you will note this. Now moving ahead with one more problem. Find the sum of the series whose nth term is find the sum of the series whose nth term is 2n cubed minus n plus 3 to the power n, 3 to the power n minus 1। ये nth टर्म हमें गिवन है 2n cubed minus n plus 3 to the power n minus 1। 2n cubed minus n plus 3 to the power n minus 1, ये हमें nth टर्म इज गिवन, nth टर्म ऑफ द सीरीज इज गिवन। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? सॉल्यूशन we have nth term is tn, nth term is tn, we have tn equal this one, Sn is what? Summation of tn, Sn is what? Summation of tn, so Sn which is summation of tn, summation of 2n cubed minus n plus 3 to the power n minus 1. This can be written as twice summation n cubed minus summation n plus summation of 3 to the power n minus 1. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी n हो जाएगा तो वो जीपी होगा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जब हो जाएगा यानी a टू द पावर n के फॉर्म में आएगा तो वो जीपी को फॉर्म करेगा। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, बट दिस इज कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल यानी n के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक जीपी को फॉर्म कर देगा। कांस्टेंट की पावर अगर लीनियर फंक्शन इन n है तो वो जीपी को फॉर्म करता है। तो हम इस कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रख लेंगे हम लोग n स्क्वायर n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर बाय 4 माइनस n प्लस 1 बाय 2 और प्लस, अब इसे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 से रखना शुरू कर देंगे। 1 रखेंगे तो 3 की पावर 0 यानी 1, फिर 2 रखेंगे 3 की पावर 1 3,
3 की पावर 2, 3 की पावर 3 and so on nth term। और यहाँ पे सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स लगा देंगे, सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स, और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतने में एन एन प्लस 1/2 कॉमन आ गया, इन दोनों टर्म से बच क्या रहा है एन एन प्लस 1 और इधर -1, और ये क्या हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी एलसीएम 2 है, सो दिस इज n n प्लस 1/2 n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 प्लस 1/2 3 की पावर n माइनस 1। This is our answer. This is our answer. Sum of n terms of the series whose nth term is given by this one. Whose nth term is given by this one. Satya, you are saying not visible. What is problem? Sandhya, having any problem? Message in the box? No problem. Okay. Moving ahead. देखिए मिसलिनियस सीरीज में सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n टर्म्स, या इस तरह की जो जीपी फॉर्म हो रही है, यही अकेले नहीं है। मिसलिनियस सीरीज दो तरीके से और बनती है, या तो दो एपीज को लेकर के बनाई गई हो लेकिन वो देखने में लग ना रही हो और उसे हम इवेलुएट करने में प्रॉब्लम कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम हो रही हो, या एपी और जीपी के मिक्सचर से बनी हो, उस केस में भी हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आइए कुछ ऐसी ही चीजों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं जिससे हम फाइंड आउट करें सम ऑफ द सीरीज किस तरह से फाइंड आउट हो सकती है। तो moving ahead with one problem, I am taking the problem. Find the sum of the first n terms of the series. Find the sum of n terms of the series the series is given to us 3 plus 7 plus 13, 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 plus and so on. Plus and so on. 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 plus and so on. अब तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं ये ना तो एपी फॉर्म कर रहा है क्योंकि 7 minus 3 4, 13 minus 7 6, 21 minus 13 8, 31 minus 21 this is 10, यानी डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया होगा जब मैं बोल रहा था, एक पैटर्न महसूस हुआ होगा। 7 minus 3 4, 13 minus 7 6, ध्यान से देखिए 4 6 8 10, इस तरह से ये एक पैटर्न है। ये देखिए ये एपी फॉर्म कर दिया, दिस इज इन एपी। इसका मतलब ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू एपीज है,
दिस सीरीज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एपीज। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। ये चीज जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर डिफरेंस एक पैटर्न एपी का फॉलो कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, निश्चित रूप से वो दो एपीज का कॉम्बिनेशन बना है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, लेट द n-1th and nth term of the series of the given series be Tn-1 and Tn, also sum of series is Sn. Also sum of series is Sn. So Sn is what? 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 plus and so on plus Tn-1 plus Tn. जब कॉम्बिनेशन ऑफ दो सीरीज, दो एपीज हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एपीज, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से n-1th टर्म nth टर्म मान लीजिए और सम ऑफ द सीरीज Sn मान लीजिए और सीरीज लीजिए, और फिर यही सीरीज सेम नेक्स्ट स्टेप पर भी लिख लीजिए, एक स्टेप छोड़ कर Sn इक्वल, अब कुछ इस तरह से लिख लीजिए 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus and so on, एक टर्म छोड़ कर लिखिए plus Tn-1 plus Tn और सबट्रैक्ट। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां से यहां तक में सीरीज में n टर्म्स हैं। जब हमने सीरीज को एक कदम आगे खिसका दिया तो इस पूरे में n+1 टर्म्स होते हैं, क्योंकि हमने सीरीज को एक टर्म आगे खिसका दिया। तो यहां से शुरू हुआ है और यहां पे जाके खत्म हो रहा है, यानी सीरीज में n+1 टर्म्स हो गए, सीरीज हैविंग n+1 टर्म्स। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, दिस विल बी 4, दिस विल बी 6, 8, 10 and so on, Tn-1 और माइनस Tn। तो यहां से यहां तक में पूरा जो है ये n+1 टर्म्स है, दिस सीरीज हैविंग n+1 टर्म्स। क्यों है ये मैं अभी बता चुका हूं, यहां से यहां तक n टर्म्स है, हमने सीरीज को एक टर्म आगे खिसका दिया है, इसका मतलब सीरीज, अब पूरा जो सीरीज है वो n+1 टर्म्स में, उस n+1 में से इसको उठा के इधर लाएंगे तो एक टर्म इधर से कम हो जाएगा, इसे राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो एक टर्म कम हो जाएगा, तो यानी यहां से लेके यहां तक में n टर्म्स हो जाएंगे। तो Tn is equal to 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus and so on, अब यहां तक में n टर्म्स हो गए। और अगर हम देखें AP तो हमारे यहां से बन गई, तो अगर यहां से ले तो n-1 टर्म्स हो जाएंगे, n-1 टर्म्स हो जाएंगे। आप देखिए इस टर्म को हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ले आए, एक टर्म कम हो गया और पहला टर्म छोड़ दिए, क्योंकि ये इस सीरीज को फॉर्म नहीं कर रहा था, तो इसको छोड़ने पे ये AP फॉर्म हो रही है, तो हम छोड़ दिए एक टर्म और, तो n-1 टर्म है। अब ये AP के n-1 टर्म का सम हमें लेना है, तो Tn is equal to 3 plus, अब सम ऑफ n-1 टर्म्स क्या होगा, n-1 by 2, 2a यानी 2 4 जा 8 plus n-1 minus 1 into d, d यानी 2 टेकन एज कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
Tn is 3 plus n minus 1. This is 4 plus n minus 2. Yani n plus 2. This is Tn equal 3 plus n square plus n minus 2. Yeah, Tn is what? Tn is our n square plus n plus 1. Sum क्या होगा? Sum SN. We know very well summation of Tn. तो अब इसे अप्लाई कर लीजिए summation of Tn, summation of n square plus n plus 1. This is sum of n terms. Summation n square plus summation n plus summation 1. And you all know very well the value of these three. Substitute it and solve this. Substitute it and solve this. You will get the final result, the sum of this series for n terms. Write down. Now moving ahead with one more problem. Hopefully you understand this sum special series. Now moving ahead with one more problem. Find the sum of n terms of the series one upon 2 into 5, 1 upon 5 into 8, 1 upon 8 into 11, 1 upon 11 into 14 plus and so on. See this question. आप जब इन दोनों नंबर में पैटर्न ढूंढिए. The difference of the number is 3. 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 So, Sn मान लीजिए sum is Sn 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus 1 upon 11 into 14 plus and so on
nth टर्म अगर हम लें तो ये 2 5 8 11 का nth टर्म जो होगा वो 3n minus 1 हो जाएगा, 3n minus 1। तो a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 3 है और nth टर्म लेना है तो a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d, this will be 3n minus 1। और इसका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 5 है तो 3n plus 2, 3n plus 2। मैंने जैसे कि कहा पैटर्न पकड़िए, 3 का डिफरेंस चल रहा है तो सीरीज को 3 से डिवाइड कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। 3 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 minus 2, 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 को इस तरह से लिख सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूं कि हमने पैटर्न पकड़ा, 3 का डिफरेंस है, 3 से डिवाइड किया और 3 से सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और उस 3 को क्या लिख दिया, दोनों के नंबर का डिफरेंस। सेम थिंग ये क्या हो जाएगा, 3n plus 2 minus 3n minus 1 whole upon 3n minus 1, 3n minus 3n plus 2 और सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। दिस विल बी 1 by 2 minus 1 by 5 plus 1 by 5 minus 1 by 8 plus 1 by 8 minus 1 by 11 plus 1 by 11 minus 1 by 14 plus and so on plus 1 by 3n minus 1 minus 1 by 3n plus 2. See this, minus 1 by 5 plus 1 by 5 ये सभी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, सभी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस दो टर्म बचेंगे, एक ये और एक ये। 1 by 3 ब्रैकेट में 1 by 2 minus 1 by 3n plus 2, एक एलसीएम 1 by 3, 3n plus 2 minus 2 whole upon 2 into 3n plus 2. 2 is cancelled with this 2, 3 will be cancelled with this 3. The result will be n upon 2, 3n plus 2. This is the sum of n terms of this series. यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने पैटर्न पकड़ाया है आपको, पैटर्न को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। Hopefully you understand well about all these things. We will meet in next part with some important questions and then this chapter will finish. Okay, thank you for your cooperation. Hopefully you have enjoyed well. We will meet with next video. Till then, goodbye. Bye bye.